Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Kids Planet with Urwa, where we think together, explore the universe, and most of all, enjoy learning. हम Science World के Tale of the Universe पे थे, and today we will be starting the second topic of Unit 2, which is Theory of the Expanding Universe. So let's start. जब डिस्कवरीज हो गई ऑफ मल्टीपल गैलेक्सीज तो साइंटिस्ट ने लिया इंटरेस्ट इन स्टडीइंग ऑफ द फॉर एग्जिस्टिंग स्टार्स. ऑब्वियसली कोई अदर सोर्स नहीं था ऑफ इंफॉर्मेशन अदर देन द लाइट रिसीव फ्रॉम दी स्टार्स, तो इसलिए साइंटिस्ट ने स्टडी किया द स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट दे रिसीव फ्रॉम वेरियस स्टार्स. ये जो स्टडी है स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट, इट इवेंचुअली ओरिजिनेटेड अ कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स. For a better understanding, मैं explain करूंगी few general characteristics of light जिन्होंने support किया a lot to strengthen the ideology of the expanding universe. Let's move on. आज जो हम सब टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है light and spectrum. So let's start. The first question to arise is what is spectrum? तो you see न्यूटन ने डिस्कवर किया कि जब लाइट गुजरती है light from the sun, it passes through a prism जो कि triangular shaped piece of glass है, तो वो break हो जाती है into its component colors called spectrum of light. While studying the spectra of these far existing stars through telescopes, it was found कि जो certain very specific colors हैं, they are missing from a star spectra. और ये जो मिसिंग कलर्स है वो वेरी कर रहे हैं फ्रॉम स्टार टू स्टार. इसकी वजह ये थी कि जो स्टार का एटमॉस्फेयर है उसमें कोई केमिकल एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जो कि अब्जॉर्ब करें अ स्पेसिफिक कलर. दैट मेंट कि बाय मैचिंग दीज मिसिंग कलर्स फ्रॉम अ स्टार स्पेक्ट्रम वन कैन डिटरमिन एग्जैक्टली कि आखिर कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है इन द स्टार्स एटमॉस्फेयर. ये जो टेक्निक है इट इज स्टिल कॉमन इन कॉस्मोलॉजिकल स्टडी. विजिबल लाइट क्या है? एक्चुअली जो विजिबल लाइट है वो कंटेन करती है अ सेट ऑफ डिफरेंट कलर्स व्हिच वी कैन सी वंस इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म. जो ईच कलर है वो एक्चुअली प्रेजेंट कर रहा है अ वेव ऑफ डिस्टिंग्विश वेवलेंथ. वेवलेंथ इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी और इसकी डेफिनेशन ये है दैट द डिस्टेंस फ्रॉम वन क्रस्ट टू अनदर क्रस्ट और द डिस्टेंस फ्रॉम वन ट्रफ टू अनदर ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ. So what happened is कि ये जो वेवलेंथ है वो एक्सट्रीमली स्मॉल है जो कि रेंज कर रही हैं फ्रॉम 4 to 7/10 millions of a meter. The different wavelengths of light are what human eyes detect as color. जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी वो अपीयर कर रही है एट द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, और जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है विच मीन्स द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो है एट द ब्लू और यू कैन से द वायलेट एंड. जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया इट इज राइट ओवर हियर. यू सी आई विल एक्सप्लेन दीज टू illustrations later on. Let's move on. Thermal spectrum. In general, जो the light emitted by any opaque object जो कि glow कर रहा है red hot, it has a characteristic spectrum that depends only on its temperature. उसको आप थर्मल स्पेक्ट्रम कहेंगे. Therefore हम स्टडी कर सकते हैं द टेम्परेचर ऑफ एनी फार ऑब्जेक्ट थ्रू द स्पेक्ट्रम ऑफ इट्स लाइट. ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इट हेल्प साइंटिस्ट टू स्टडी टेम्परेचर ऑफ वेरियस स्टार्स इन डिस्टेंट गैलेक्सीज. नाउ दिस इज द विजिबल स्पेक्ट्रम. यू कैन सी कि जैसे आपने स्टडी किया था कि जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है मीनिंग द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी वो अपीयर करेंगे एट द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम. And we also learned कि जो shortest wavelength है which means highest frequency वो appear करेंगे at the violet end. You see this ये illustration दिखा रही है the experiment Newton did कि जब sunlight pass through होगी through the glass prism which is a triangular shaped piece of glass, तो it will break up into its component colors. And that's all we learned for today. Tomorrow we will learn about the Doppler's effect. Thank you.